अगर मोहन भागवत किसी और देश में होते तो इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए होते। दोस्तों, सरसंघचालक मोहन भागवत, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के लिए इस तरह की टिप्पणी कभी शायद ही किसी ने की हो जो आज राहुल गांधी ने की। कांग्रेस अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो गई, शानदार नया दफ्तर मीडिया के सामने रखा गया, लेकिन इस शानदार नए दफ्तर में राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से न केवल मोहन भागवत पर हमला बोला बल्कि चुनाव आयोग को भी लपेट डाला और चुनाव आयोग से कह दिया हम आप पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं मोहन भागवत को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। दरअसल दोस्तों, मोहन भागवत ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि असली आजादी देश को तब मिली जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। दोस्तों, मोहन भागवत ने अपने इस बयान में कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद उस विशिष्ट दृष्टि को दिखाई राह के मुताबिक लिखित संविधान बनाया गया जो देश के स्व से निकलती है, लेकिन यह संविधान उस वक्त उस दृष्टि भाव के अनुसार नहीं चला। ये मोहन भागवत ने कहा था। आगे उन्होंने कहा था भगवान राम, कृष्ण और शिव की प्रस्तुत आदर्श और जीवन मूल्य भारत के स्व में शामिल हैं और ऐसी बात कतई नहीं है कि ये केवल उन्हीं लोगों के देवता हैं जो उनकी पूजा करते हैं। मोहन भागवत इस तरह के बयान देते रहे हैं कि इस देश में जो रहता है वो हर इंसान हिंदू है, लेकिन इस तरह का बयान कि असली आज़ादी देश को दरअसल तब मिली जब रामलला विराजमान हुए, रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, तो ये अपने आप में एक बहुत ही विवादास्पद बयान था दोस्तों। लेकिन मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाने की हिम्मत कौन करेगा? ना तो मीडिया में इतनी हिम्मत है, बीजेपी में तो खैर कौन ही हिम्मत करेगा, और विपक्ष के नेता भी आरएसएस पर सीधा हमला करने से बचते हैं, डरते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि जो मोहन भागवत का बयान है ये संविधान विरोधी बयान है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किसी और देश में अगर मोहन भागवत ये बात बोलते तो वो गिरफ्तार हो गए होते, और मोहन भागवत जैसे लोगों की बकवास सुनना हमको बंद कर देना चाहिए। On the other side, there is the idea of a centralized knowledge, of a centralized understanding. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी आते हैं अपने भाषण के दूसरे हिस्से में, जहां वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि महाराष्ट्र चुनाव में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। ये दावा राहुल गांधी का था कि महाराष्ट्र में वोटिंग डेटा को लेकर लगातार विपक्ष चुनाव आयोग से डेटा की मांग कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग डेटा देने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जो चुनाव आयोग छुपा रहा है? That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. In the last working committee meeting, I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the election commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra, is problematic.
And I put a challenge clearly in front of the Election Commission. And I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. If they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the Election Commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the Election Commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list of the Maharashtra Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility of the Election Commission to show us exactly why that has happened, and they are refusing to do it. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election system. And we might find it very difficult to accept this, because we are the people who have put in place the election system. But we have to keep it in mind that there is a problem. And it is the duty of the Election Commission to come clean and to give us the data of the Maharashtra and the Haryana elections, to give us the data we are asking for, the opposition is asking for, and which they are refusing to give us. So that is the situation in which we are fighting. Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. They're being used against all opposition leadership. CBI, ED, all these structures. We do not know whether our institutions are working or are non-functional. It's pretty clear the media, what the media is up to. Everybody knows. Even the people know that the media is no longer free and fair. So these are circumstances under which you're fighting this ideological battle. And I must tell you that I'm extremely proud of every single one of you. That you get up in the morning, and you stand and you fight for what you believe in and what you know to be your politics. दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।